हेलो दोस्तों, आपको स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में प्रैक्टिस विथ इन्फिनिटी। तो चलिए मैं शुरू करते हैं। पहला चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड। क्वेश्चन नंबर 1, स्पीसीज आर कंसिडर्ड एज ऑप्शन ए रियल बेसिक यूनिट्स ऑफ क्लासिफिकेशन, ऑप्शन बी द लोएस्ट यूनिट्स ऑफ क्लासिफिकेशन, ऑप्शन सी आर्टिफिशियल कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन माइंड व्हिच कैन नॉट बी डिफाइंड इन एब्सोल्यूट टर्म्स, ऑप्शन डी रियल यूनिट्स ऑफ क्लासिफिकेशन डिवाइज्ड बाय टैक्सोनॉमिस्ट। एक्सप्लेनेशन। देखो, बायोलॉजी में स्पीसीज एक बेसिक यूनिट होती है क्लासिफिकेशन की। मतलब जब साइंटिस्ट लिविंग थिंग को कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं तो सबसे छोटी और इम्पॉर्टेंट कैटेगरी होती है स्पीसीज। स्पीसीज का सिंपल मतलब ये है एक ऐसी ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म जो आपस में रिप्रोड्यूस कर सके और उनके बच्चे ऑफस्प्रिंग फर्टाइल हो, मतलब वो आगे अपने बच्चे पैदा कर सके। एग्जाम्पल के लिए डॉग की अलग स्पीसीज होती है, कैट की अलग स्पीसीज होती है। डॉग और कैट आपस में ब्रीड नहीं कर सकते, इसलिए वो अलग स्पीसीज है। तो इसके हिसाब से ऑप्शन ए करेक्ट। क्वेश्चन 2, बायोसिस्टेमेटिक्स एम्स एट ऑप्शन ए द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन ब्रॉड मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, ऑप्शन बी delimiting various taxa of organism and establishing their relationship, option C the classification of organism based on their evolutionary history and establishing their phylogeny on the totality of various parameters from all fields of studies, identification, option D identification and arrangement of organism on the basis of their cytological characteristics। एक्सप्लेनेशन। देखो, बायोसिस्टेमेटिक्स का मतलब होता है टैक्सोनॉमी, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म को मॉडर्न साइंटिफिक मेथड से करना। ये सिर्फ ऑर्गेनिज्म के नाम रखने तक सीमित नहीं होती, ऑर्गेनिज्म के आइडेंटिफिकेशन, नेमिंग, क्लासिफिकेशन और उनके एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को समझने भी इंक्लूड करते हैं। तो इसके हिसाब से ऑप्शन सी करेक्ट। क्वेश्चन 3, cellular totipotency is demonstrated by option A only gymnosperm cell, B all plant cell, option C all eukaryotic cell, option D only bacterial cells। एक्सप्लेनेशन। देखो, सेलुलर टोटिपोटेंसी का मतलब होता है कि एक सिंगल सेल के एक पास और पूरा ऑर्गेनिज्म बनाने की कैपेबिलिटी होती है। ये कॉन्सेप्ट मेनली प्लांट्स में दिखाई देती है, जहाँ एक सिंपल प्लांट सेल से पूरा नया प्लांट ग्रो हो सकता है। तो इसके हिसाब से ऑप्शन बी करेक्ट। Question 4, one of the most important function of botanical gardens is that option A they provide a beautiful area for recreation, option B one can observe tropical plants there, option C they allow ex situ conservation of germplasm, option D they provide the natural habitat for wildlife। एक्सप्लेनेशन। बॉटनिकल गार्डन्स एंडेंजर्ड और रेयर प्लांट्स को प्रोटेक्ट करते हैं। ये गार्डन्स एक लिविंग म्यूजियम की तरह होती है जहाँ प्लांट्स को ग्रो करके उनकी सुरक्षा की जाती है। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, एक्सिटू प्लांट्स को उनके नेचुरल हैबिटेट के बाहर प्रिजर्व करना, ऑप्शन सी करेक्ट, दे अलाउ एक्सिटू कंजर्वेशन ऑफ germplasm। Question 5, two plants can be conclusively said to belong to the same species if they, option A have more than 90% similar genes, option B look similar and possess identical secondary metabolic, option C have same number of chromosomes, option D can reproduce freely with each other and from seeds। एक्सप्लेनेशन। अगर दो प्लांट एक दूसरे के साथ सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं और उनके जो बच्चे होते हैं ऑफस्प्रिंग वो भी फर्टाइल होते हैं, यानी आगे रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, तो उन्हें सेम स्पीसीज का माना जाता है। ऑप्शन डी करेक्ट, कैन रिप्रोड्यूस फ्रीली विथ ईच अदर एंड फ्रॉम सीड्स। Question 6, the living organism can be unexceptionally distinguished from the non-living things on the basis of their ability for, option A interaction with the environment and progressive evolution, option B reproduction, option C growth and movement, option D responsiveness to touch। एक्सप्लेनेशन। लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने जैसे नया ऑर्गेनिज्म को रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, जबकि नॉन लिविंग थिंग में एक कैपेबिलिटी नहीं होती। रिप्रोड्यूसन एक ऐसी प्रोसेस है जो लाइफ के डिपेंडेंट प्रूफ है। हालांकि कुछ एक्सेप्शन होती है, जैसे मूले ये वर्कर बीज जो रिप्रोड्यूस नहीं करते, लेकिन ओवरऑल रिप्रोडक्शन एक
मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है जो लिविंग और नॉन लिविंग में डिफरेंस बताता है। ऑप्शन बी करेक्ट, रिप्रोडक्शन। क्वेश्चन 7, ICBN स्टैंड्स फॉर। ऑप्शन ए इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर, ऑप्शन बी इंटरनेशनल कांग्रेस ऑफ बायोलॉजिकल नेम्स, ऑप्शन सी इंडियन कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर, ऑप्शन डी इंडियन कांग्रेस ऑफ बायोलॉजिकल नेम्स। एक्सप्लेनेशन। ICBN एक साइंटिफिक रूल बुक है जो प्लांट्स के नाम रखने नेमिंग के लिए यूज़ होती है। इसके पर्पस है कि पूरे वर्ल्ड में प्लांट्स के नाम एक जैसे और स्टैंडर्ड हो ताकि कॉन्फ्यूजन ना हो। ऑप्शन ए करेक्ट, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर। क्वेश्चन 8, फाइलोजेनेटिक सिस्टम of classification is based on option A evolutionary relationship, option B morphological features, option C chemical constitution, option D floral characters. एक्सप्लेनेशन। फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑर्गेनिज्म को उनके इवोल्यूशनरी हिस्ट्री के बेस पर ग्रुप करते हैं। इस सिस्टम में ऑर्गेनिज्म को कॉमन एंसेस्टर दिखे जाता है। सिमिलरिटीज इन DNA, जीन स्ट्रक्चर और फॉसिल रिकॉर्ड्स का यूज़ होता है। जितना ज़्यादा कॉमन एंसेस्टर रिसेंट होगा उतनी ज़्यादा सिमिलरिटी होगा। तो ऑप्शन ए करेक्ट, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। Question 9, which one of the following except is an exclusive characteristics of living things? Option A isolated metabolic reaction occur in vitro, option B increase in mass from inside only, option C perception of events happening in the environment and their memory, option D increase in mass by accumulation of material both on surface as well as internally. एक्सप्लेनेशन। लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने आप आसपास होने वाले इवेंट्स को परसीव करते हैं यानी महसूस फील करते हैं। ये परसेप्शन उनके नर्वस सिस्टम के सेंसरी ऑर्गन्स के थ्रू होता है। साथ ही वो इवेंट्स एक एक्सपीरियंस को याद भी रखते हैं। इसे हम मेमोरी कहते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट। Question 10, which one of the following animals is correctly matched with its particular name taxonomy category? Option A cuttlefish mollusca a class, option B humans primata the family, option C the housefly mucus an order, option D tiger tigris the species. एक्सप्लेनेशन। स्पीसीज का मतलब होता है एक ऐसे ग्रुप जिसमें एनिमल्स नेचुरली इंटरब्रीड कर सकते हैं और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग बच्चे प्रोड्यूस करते हैं। बायोनॉमिकल नोमेनक्लेचर सिस्टम में हर ऑर्गेनिज्म को दो पार्ट साइंटिफिक नेम होता है, पहला पार्ट जीनस और दूसरा पार्ट स्पीसीज। इस तरह से ऑप्शन डी करेक्ट, टाइगर टाइग्रिस द स्पीसीज।